Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The next chapter we are going to start is reproduction and the development. What is the reproduction? This is the basic attribute of all forms of life, and we will discuss about the general features of animal development and control processes that allow a genotype to be translated into its phenotypes. Although in modern zoology, development is a center stage in the reproduction, the whole process includes the behavior, anatomy, and physiology of the adults, and whether protist or the invertebrates or the vertebrates. In this chapter, we will focus on different reproductive strategies observed in protist, invertebrates, and the 5 major groups of the vertebrates. First of all, we will discuss the types of reproduction. There are 2 types of reproduction, asexual reproduction and that of the sexual reproduction. First of all, we will discuss asexual type of reproduction in case of the invertebrates. And in the biological sense, reproduction means producing offsprings that may or may not be the exact copies of the parents. Reproduction is a part of the life cycle, a recurring frame of events in which animals grow, develop, and reproduce according to the program of instruction encoded in the DNA they inherit from the parents. One of the 2 major types of reproduction in the biological world is the asexual reproduction. रिप्रोडक्शन के क्या मतलब होता है कि ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें पेरेंट्स से, या तो वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हों, सिमिलर हों, या उनसे डिफरेंट, एग्जैक्ट कॉपी ना हो या एग्जैक्ट कॉपीज़ हों, ये मस्ट नहीं है। और ये लाइफ साइकिल का पार्ट है, और इसी के अंदर जो है हम डिस्कस करते हैं एनिमल्स की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, और ये सारा कुछ जो है उसकी रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि उसके डीएनए के अंदर इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं उसके मुताबिक होती हैं, जो वो अपने पेरेंट्स से जो है इनहेरिट करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual and sexual. The first organism to evolve probably reproduced by pinching in two, much like the simplest organism that exists today. This is form of the reproduction. यानी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म था, दरमियान में पिंच हुआ और एक से जो है वो 2 बन गए, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, which is the reproduction without the union of gametes or the sex cell. So asexual reproduction is the reproduction in which no union of the gametes or the sex cells are involved. In the first 2 billion years or more of evolution, forms of asexual reproduction were probably the only means by which the primitive organisms could increase their number. While asexual reproduction effectively increased the number of species, those species reproducing asexually tend to evolve very slowly, because all offsprings of any one individual are alike, providing less genetic diversity for evolutionary selection. asexual reproduction शुरू में कॉमन थी, लेकिन जो है स्लो प्रोसेस था, बिकॉज तमाम इंडिविजुअल्स जो हैं वो मिलते जुलते थे, एग्जैक्ट कॉपीज़ थे, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है बिकॉज ऑफ asexual रिप्रोडक्शन जो है वो कम थी. Asexual reproduction is common among the protozoan as well as among the lower invertebrates such as sponges, jellyfishes, flatworms, and many segmented worms. Asexual reproduction is rare among the higher invertebrates. The ability to reproduce asexually often correlate with the marked capacity for regeneration. In the lower invertebrates, the most common forms of asexual reproduction are fission, budding, both internal or the external, and the fragmentation. Parthenogenesis, which is comparatively uncommon, also occurs in few invertebrates. First is the fission. What is the fission? That is the act of splitting means. It is a division of one cell body or the body parts into two. In this process, cell pinches into two by an inward furring of plasma membrane. अंदर की तरफ जो है वो सेल धंस जाता है, जिसकी वजह से एक सेल जो है वो 2 सेल्स में तकसीम हो जाता है. एग्जांपल्स इसकी हैं प्रोटिस्ट की और सब मल्टीसेलुलर एनिमल्स, निडेरियंस एंड एनलिड्स की. इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, आइदर इट इज़ ऑफ बाइनरी फिशन. In binary fission, the body of the parent divides by mitosis into 2 approximately equal parts. Each part grows into an individual similar to the parents. It is longitudinal in the flagellates, flagellate protozoon, or transverse in the ciliate protozoon.
या तो बाइनरी फिशन लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, वर्टिकली साइड से हो सकती है, या जो है वो जो है ट्रांसवर्स होगी। अगर तो लॉन्गिट्यूडनल होगी तो इसकी एग्जांपल्स में फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स होंगे। इन केस ऑफ द ट्रांसवर्स जो है ये सीलिएट प्रोटोजोन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो मल्टीपल फिशन है, जिसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स जो है वो अपीयर हो जाएं, यानी काफ़ी सारे डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएं, तो वो मल्टीपल फिशन कहलाता है। द डिवीजन ऑफ cells into numerous smaller daughter cells is called the multiple fission. In it, the nucleus divides repeatedly before the division of cytoplasm, producing many daughter cells simultaneously. सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी सारा डिवाइड होता है और काफ़ी सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट बन जाता है। फिर जो है उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है साइटोप्लाज्म गैदर हो जाता है, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है। इस तरह एक सेल से जो है वो काफ़ी सारे सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। एग्जांपल्स में है सम फ्लैटवर्म्स एंड द एनलेट रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिशन एंड दे फॉर्म constrictions along the length of the body. It produces a chain of the daughter cells. Spore formation called sporogony is a form of multiple fission. It occurs in the malaria parasites. We have discussed in the paper B. Next is the budding. Budding is the development of a new individual by the formation of an outgrowth is called the budding. Example, it is found in many lower invertebrates like cnidarians. Budding is of two types, either it is external budding or the internal budding. External budding hydra and many species of sponges develop an external bud on the body surface. The bud cells proliferate. Bud cells जो हैं वो divide करते हैं and form a cylindrical structure that breaks away from the parent and develops into the new animal. एक बर्ड सा अपीयर होगा, कुछ अरसे बाद जो है उसके अंदर डिवीजन होगी और एक स्ट्रक्चर सी बन जाएगी, कुछ अरसे बाद जो है वो अपने पेरेंट से अलग हो जाएगी एंड कंप्लीट जो है वो इंडिविजुअल बन जाएगा। If the bird remains attached to the parent, they form a colony. A colony is a group of closely associated individuals of one species. And the second one is the internal bud. Internal buds gemmules. In case of the sponges, we have discussed. Internal buds gemmules form in the freshwater sponges. Gemmules are collections of many cells surrounded by body wall. The body of the parent dies and degenerates, and each gemmule gives rise to a new individual. And this is the diagram showing the binary fission in case of amoeba and in case of flagellate and ciliate. A is of the fission in case of the binary fission in case of an amoeba. दो सेल्स बन रहे हैं, एक सेल से दरमियान में पिंचिंग सी हुई है और एक सेल दो सेल में डिवाइड कर गया है और इस तरह एक न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गए हैं। इस तरह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की तादाद भी देखें दो हो गई हैं। नेक्स्ट जो है वो फ्लैजिलेट के अंदर देखें फ्लैजेला मौजूद है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद हैं, दो न्यूक्लियाई और ये वर्टिकली जो है वो डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट जो है सी जो है वो सीलिएट के अंदर देखें, सीलिएट के अंदर भी आपको इस तरह ही डिवीजन नज़र आती है कि एक सेल जो है वो दो सेल के अंदर डिवाइड कर गया है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल फिशन इन केस ऑफ द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर शाइज़ोन बनता है सेल, शाइज़ोन जो है वो डिवाइड करेगा, डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। डॉटर न्यूक्लियाई से नेक्स्ट जो है वो मीरोजाइट्स और मीरोजाइट जो है शाइज़ोन की वॉल जो है वो रप्चर करेंगे और बाहर निकल आएंगे। नेक्स्ट जो है वो हाइड्रा की एग्जांपल है एक्सटर्नल बर्डिंग की, जिसमें जो एक्सटर्नल बर्ड्स जो है वो यंग सा बर्ड प्रोड्यूस हो रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होती है, सिलेंड्रिकल सा सेल प्रोड्यूस हुआ और जो है जब ये यंग हो जाता है तो रप्चर हो जाता है और वो स्विम अवे कर जाता है इस तरह, और सम टाइम जो है वो यहीं पे मौजूद रहता है और एक कॉलोनी की फॉर्म जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट जो है स्पॉन्जेस हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, जिनके अंदर इंटरनल बर्ड जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और ये उसके अंदर पोरिफेरेंस के अंदर जो है वो कॉमन है। ये जिम्यूज़ जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे फेवरेबल इन्वायरमेंट मौजूद होता है, फेवरेबल इन्वायरमेंट के अप्रोच पे जो है ये ग्रो कर जाते हैं और पूरी कॉलोनी जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? ब्रेक डाउन हो जाना, जिसमें एक पार्ट जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, फिर रीजनरेट कर जाएगा।
Fragmentation is a type of asexual reproduction in which a body part is lost and then regenerates into a new organism. Fragmentation occurs in some cnidarians, platyhelminthes, rhynchos, seals, and echinoderms. For example, in sea anemone, when it moves, small pieces break off from the adult. It develops into the new individual. सी एनिमोन के अंदर जो है छोटे छोटे से जो है पार्ट्स ब्रेक होते जाते हैं और वो कुछ अर्से बाद अडल्ट में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है पार्थिनोजेनेसिस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डेफिनेशन इससे क्या हो सकती है? द डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म। अनफर्टिलाइज्ड एग हमेशा जो है रिप्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। और पीछे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी जिसमें बाइनरी फिशन पढ़ी, हमने मल्टीपल फिशन पढ़ी, लेकिन यहाँ बडिंग पढ़ी है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो डेवलप कर जाए जब एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उस प्रोसेस को जो है हम पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। इट अकर्स इन केस ऑफ द फ्लैटवर्म्स, रोटिफर्स, राउंडवर्म्स, इंसेक्ट एंड द लॉबस्टर्स। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? मोस्ट पार्थोजेनेटिक एनिमल्स आल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन देयर लाइफ साइकिल, इन देयर लाइफ हिस्ट्रीज। Parthenogenesis is a spontaneous activation of mature eggs. It is followed by normal egg divisions and embryonic development without fertilization. फर्स्ट ऑफ ऑल एग जो है वो किसी भी ज़रिए से एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और इस तरह वो कंप्लीट इंडिविजुअल के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। Parthenogenesis means Parthenos, virgin, and Genesis, production. Activation of eggs occurs by means of pricking them with a needle, or by exposing them to the high concentration of calcium, or by altering their temperature. Because parthenogenetic eggs are not fertilized, they do not receive male chromosome. The offsprings have only a haploid set of chromosomes. However, in some animals, meiotic division is suppressed so the diploid number is conserved. In other animals, meiosis occurs but unusual mitosis returns the haploid embryonic cells to the diploid condition. Overall, animals that reproduce parthenogenetically have substantially less genetic variability than do animals with chromosome sets from the two parents. This condition may be an advantageous for the animals that are well adapted to relatively stable environment. However, in meeting the challenges of the changing environment, parthenogenetic animals may have less flexibility, which may explain why this form of reproduction is relatively uncommon. जो पार्थिनोजेनेटिकली जो है रिप्रोडक्शन होगी उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं उनके अंदर जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो कम होगी, तो चेंजिंग इन्वायरमेंट को जो है वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो है वो लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए ये रिप्रोडक्शन की फॉर्म जो है वो लेस कॉमन है। पार्थिनोजेनेसिस आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉलोनीज ऑफ सर्टेन बीज, wasps and ants. In these insects, large number of males drones are produced parthenogenetically, whereas sterile females, workers, and reproductive females, queens, are produced sexually. मेल्स जो ड्रोन्स कहा जाता है हनी बी की फैमिली के अंदर देखा जाए तो वो ड्रोन्स जो होते हैं पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जो स्टीराइल फीमेल्स हैं, वर्कर्स हैं एंड रिप्रोडक्टिव पूरी कॉलोनी होती है बीज की, तो उनके अंदर बाकी सारे जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होते हैं। फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन, applied parthenogenesis in the life cycle of honey bee colony is shown. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अनफर्टिलाइज्ड एग है, N16 इसके पास नंबर है, फेड ऑन द हनी एंड द पोलन, पार्थिनोजेनेसिस इसके अंदर हो रही है, ड्रोन बन रहा है, ड्रोन जो है मेल है, देन वो माइटोसिस हो रही है, स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म जो है मेटिंग हुई, फिर मेटिंग से जो है अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस हुए, उससे फर्दर जो है वो ड्रोन प्रोड्यूस हो गए, देन जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ जस्ट वन पेरेंट, रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, डिस्पर्सल ऑफ स्पीशीज़ हैं इसके अंदर ज़्यादा। नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेजेस देखें तो जेनेटिक वेरिएशन कोई नहीं है, और
अगर ऑर्गेनिज्म जो है एक एरिया में फैल गई हैं तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और रिडक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो है वो हो जाएगी। और इसी तरह जो है डिवेस्टेशन ऑफ द पॉपुलेशन भी हो सकती है। ड्यू टू दिस रिप्रोडक्शन ए पॉपुलेशन जेनेटिकली आइडेंटिकल एनिमल्स कैन बी डिवेस्टेटेड बाय सिंगल डिजीज और द ड्रॉट। चेंजिंग इन्वायरमेंट को भी कोप नहीं कर सकते। इसी तरह जो है उनके अंदर लीथल म्यूटेशन जो है वो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पास ऑन करें। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं। The predominance of asexual reproduction in the protists and some invertebrates can be partially explained by the environment in which they live. The marine environment is usually very stable, so stable environments may favor this form of reproduction because a combination of genes that matches the relatively unchanging environment is an advantageous for over a greater number of genes combination, many of which do not match the environment. In other habitats, asexual reproduction is seasonal. The season during which asexual reproduction occurs coincides with the period when the environment is predictably hospitable. Under such conditions, it is advantageous for the animal to produce asexually a large number of progeny with identical characteristics. A large number of animals well adapted to a given environment can be produced even if only one parent is present. You can say कि स्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर ऑर्गेनिजम्स के लिए, और सिंगल पेरेंट चाहिए होते हैं जिसकी वजह से उनको अपनी प्रोजेनी में इजाफा कर लेते हैं या अपनी तादाद में जो है वो इजाफा कर लेते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि जेनेटिक वायरेबिलिटी जो है वो नहीं है, और इस तरह पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल एनिमल्स स्टैंड्स अ ग्रेटर increased chance of being devastated by a single disease or environmental insult such as long drought. सारे एक जैसे होंगे तो उनके अंदर एक जैसे जेनेटिक मेकअप है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब भी कोई एक प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम वो सीवियर हो जाता है। A given line of asexually reproducing animals can cope with a changing environment only through the relatively rare spontaneous mutation alteration in the genetic material that proved to be the beneficial. Paradoxically, however, most mutations are detrimental or lethal, and herein lies one of the greatest disadvantages of the asexual reproduction. All such mutations are passed to the every offspring along with the normal unmutated genes. Consequently, the typical asexual animals may have only one good copy of each hereditary unit. The one on the homologous chromosome may be mutated form that is non-functional or potentially lethal. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है की निस्बत जो है ये इतना बेनिफिशियल नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ इसके एडवांटेजेस हैं कि स्टेबल इन्वायरमेंट है या एक पेरेंट चाहिए होता है, लेकिन जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि इनके अंदर जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो नहीं है। तो इसके अंदर जो इन्वायरमेंटल कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डिजीज़ आती है तो वो ज़्यादा कॉमन हो जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और ये चेंजिंग इन्वायरमेंट को जो है वो बेयर नहीं कर सकते आइदर के उनके अंदर कोई स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस ना हो जाए। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है होंगी तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है या तो फिर वो बेनिफिशियल होनी चाहिए, लेकिन अक्सर जो है वो डेट्रीमेंटल या लीथल हो जाती हैं, और ये म्यूटेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो जाती हैं। इस तरह ये हमारा जो टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।